अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen. Last time हम लोगों ने लैब 3 में पढ़ा था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑप एम्प को यूज़ किया था एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसमें हम लोग होता ये था कि जो भी इनपुट आ रहा था it was amplified like 1 volt आ रहा था तो that became 10 volts or 5 volts peak to peak if you say. So this lab number 4 is kind of like that, but इस lab में हम लोग पढ़ेंगे about non-inverting amplifier and voltage followers. Now what is that? इस पे हम लोग जरा गौर फरमाते हैं, but take a look at this last time. ये हमारी लैब 3 में जो हम लोगों ने किया था परफॉर्म of an inverting amplifier. It looked like this. Okay, let's just give it a go here and see that we have a inverted output here, just like that. When it's going positive, it's going negative, the output is inverted with comparison to our input. So that was your lab number 3. I don't want to save it. Now, let's come over to lab number 4 and work it out what a non-inverting configuration is, what a voltage follower is. First of all, let me just open this. Yeah. So here we go. तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसे लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशंस भी बताई थी. So yeah, it's always important to understand and to learn के applications क्या है उनकी. ठीक है, क्यों यूज होते हैं, क्यों सीख रहे हैं, because I don't want you guys to feel like it's like a complete waste of time. Everything has a reason why you're studying it. Like you can go through our old lectures and you will find out, but just for a brief moment let's just recall that कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स आर यूज्ड जहाँ पे आपके पास वीक सिग्नल आ रहा है बट ऑल्सो यू नीड टू इन्वर्ट इट. लाइक मैंने एक आईज का जो है वो एग्जांपल दी थी कि हमारी जो ह्यूमन आई है इट्स बेसिकली इट लुक्स इन्वर्टेड, और जो हमारे मोबाइल का कैमरा है वो भी इन्वर्टेड होता है, बट दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो कि उसे दोबारा से इन्वर्ट करते हैं to present it the way that it is. So the same goes with the eye, and when your signal is weak, जब आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, you wear glasses, so that's gain for you, that's amplification for you. So non-inverting amplifier की configuration पे चलते हैं. As you can see here, we will get the gain, but this won't be inverted like our previous one. ऑब्वियसली इसकी अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं, लाइक म्यूजिक एम्पलीफायर्स, voltage amplifiers, that sort of thing. You don't want to invert them, you just want the amplification. So that's what it is. So इस lab में we will simulate this. What do we have? A configuration that we have. This is schematic diagram. So let's move on and see what happens. Okay, the result. Okay, the concept is the same. ठीक है, जो कि हमने lab 3 में देखा था. The concept is exactly the same. It's just it's not inverting and that was inverting. So let's see here. What do we have? I will just focus on this one, and yeah, there you go. Hmm. Much better. So first of all, let's take a function generator. Okay. Or we need resistors of again 1k and 10k.
लाइक लास्ट टाइम जब मैंने एग्जांपल दी थी जस्ट लाइक दैट, इधर भी हम 1K एंड 10K का एक रजिस्टर लगा के देखते हैं. सो I'll get to 1K and then another 1K. So yeah, इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं टू 10K. अच्छा रिमेम्बर कि यू नो हमारे इसमें ये ओके सॉफ्टवेयर में एक्चुअली इन्वर्टेड पिन्स इन्वर्ट हुई हुई हैं. पिन नंबर 3 is upside and it's downside. So उसे ज़रा हमें फॉलो करना है. So that's all we have. We need an oscilloscope as well. So let's fetch an oscilloscope. We need ground, power sources, ground. Okay, yeah, and we have it. Other than that, we need VCC and VEE close, and last we need the op amp. ठीक है, इसे इन्वर्ट करते हैं. वी विल फ्लिप इट वर्टिकली. चाहिए वोल्टेज हमने लास्ट टाइम हमने वोल्टेज यूज किया था -15 वोल्ट टू 15 वोल्ट. ओके, सो यहाँ हम लोग सेम -15 to 15. Yeah, there we go. Let's just connect these. Okay. Function generators, common goes to ground. This will go to pin number 3. Yes. इसे ऊपर कर लेते हैं. ठीक है. Function generator is done. And what else do we need? Yes, now we need to connect these resistors. ठीक है. This goes to pin number 2. This will be connected between these. Pin number 6. Notice that just like non-inverting, हम लोग अभी फीडबैक लूप जो है वो नॉन इन्वर्टिंग में ही ले रहे हैं. लाइक negative sign. When we were using it as a inverting amplifier, तो तब भी हमने inverted pin को ही as a feedback loop use किया था. The same way now we are at non-inverting, but still we are using pin number 2 as our feedback loop. Just the difference is कि function generator non-inverting pin पे लगा हुआ है and pin number 2 पे ground connected है. Unlike last time, you guys obviously remember that. So that's what's happening right here. Okay, now हम सबसे पहले I think A को input रखते हैं. ठीक है, goes our ground. इसे मिड में ले आते हैं.
Why is it like this? Okay, fine. Yeah, better. Okay, pin number B will be our output. Okay, with that, I think we're good to go. Again, we will go for a triangular wave, frequency 1, amplitude will be 1 VP, peak to peak, and now let's fire this thing up. Yeah, we're ready. Bismillahirrahmanirrahim. This is again obviously way too fast, so we have to go for 500 millisecond. Okay, so you see, this is absolutely working fine. As you can see here, मैं इसे stop करता हूँ at a good time. Yeah, as you can see, जो ये हमारे पास जो स्मॉल बार आ रहा है, जो ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आ रही है छोटी वाली, that is our input. Okay, that is 1 volt peak to peak. That means it's going 1 volt up and 1 volt down, which is equal to 2 volts exactly, but 1 volt peak to peak. Okay, so and exactly the same way. No, wait, let me just see this. That is 5 volts per division. So this is one division, this is two, that's 10 volts, and that goes over. So that means 1 volts and 1. Okay, fine. So you see, इधर हमारे पास गेन 10 का गेन हुआ है, ठीक है. हमने इसे प्रोवाइड किया 1 वोल्ट पीक टू पीक, विच मीन्स 1 वोल्ट अप एंड 1 वोल्ट डाउन. हमारे पास गेन हुआ है 10 का, 10 वोल्ट्स का गेन हुआ है, 10 पॉइंट्स का गेन हुआ है, however you like to say it. So अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है that is 10 volts peak to peak, ठीक है, which is kind of exactly equals to your 20 volts, around 20 volts, ठीक है. So that means कि आपका गेन हुआ 10 volts, 10 times गेन हुआ आपका. So but ये चीज तो हम लोग लैब 3 में भी देख चुके थे ऑलरेडी. यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दिस इज इन लाइन विथ योर आउटपुट. ओके, योर इनपुट इज, मैं अगर इनपुट को थोड़ा बड़ा करूँ और इसे यहाँ पे लेकर आऊँ, so you can see it's not inverting. Okay, it's not inverted like lab number 3 में we were looking at inverting amplifier, जहाँ पर हमारे पास when it's going up the output was going down. इसमें when it's going up the output is going up, so it's in phase with your output. आपके बीच में 180 degrees का phase shift नहीं है. So you're in phase with your output now. So that is it. That is for your non-inverting amplifier. I'm gonna save this for maybe later use. Save as outside. We will lab 4. Okay. So that was for our non-inverting amplifier. Now let's take a look at our voltage follower, shall we? Uh, quit this and go to software and start it up. ठीक है, voltage follower. अच्छा, यहाँ पर again you have been given your instructions, your procedures.
Please go through them. Okay. These are online procedures for you. How do you want to do your lab? And then again आपको कुछ values दी गई हैं कि you have to build a non-inverting amplifier with a closed loop gain of 7. Okay, now हमने अभी gain of 10 देखा था. You have to make one of gain 7 non-inverting amplifier. Okay, and resistance greater than 1 kilo ohms, because just like last time I told you कि आपकी इनपुट इम्पीडेंस होती है, सो बेटर देन ग्रेटर देन 1 किलो ओम्स. बट जितना छोटे से छोटा आप यूज कर सकते हो आप करो. अच्छा, 2 वोल्ट पीक टू पीक देना है, 2 हर्ट्ज की साइन वेव देनी है, एंड देन यू हैव टू सी व्हाट यू आर गोइंग गेटिंग आउट ऑफ इट. So you have been given these values just like your lab number 3. Go through them, fill this table, answer these questions, okay, and then submit your lab. So let's move on to voltage follower. Okay, voltage follower में हमारे पास voltage follower basically होता क्या है? ठीक है, this is like a special configuration of आपके non-inverting amplifier. ठीक है, आपके पास again जैसे पहले था feedback resistance होती थी. So again we have feedback resistance of R2 and R1 just like before, और उनको हम equal to रखते हैं 0 के. सही है. So in other words, what I'm trying to say is कि feedback resistance नहीं है, you can say that, but there is the feedback resistance, as you guys know that हम लोग पिछली labs में lab like जितनी भी हम लोग ये closed loop gains वाली lab कर चुके हैं, lab 2, 3 and now current lab 4. So we had a feedback resistance, right? Like R1 and R2. So in this lab, what we're going to do is we're going to equal R1 and R2 equal to 0. Okay. R will basically R1 जो है वो infinity कहलाएगी, because you know इसका मैं ये कह सकता हूँ that you are replacing R1 by infinity and R2 by 0, because R2 is a short line. Okay, short circuited line है. यहाँ पर आपके पास R2 होता था, there is no more R2, which means इस line में जो आपकी resistance है वो 0 है. Well, obviously in real life applications ये 0 नहीं होती, because आपकी wire की resistance होती है, there is always some sort of resistance in your wire. So basically what we're considering is R2 जो है वो आपका equal to 0 है, and R1 चूंकि open loop हो चुका है, open हो चुका है, so circuit, so that is why we're saying कि R1 जो है वो infinity है, जबकि आसान अल्फाजों में there is no R1 and R2. Okay, so अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल हो जाता है. ठीक है, आउटपुट और इनपुट जो है वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के. The output is connected directly back to negative inverting input, so the feedback is 100%, and due to large open loop gain of op amp, V in is equal to V out. So अच्छा, to be realistic, अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देखो तो अगेन आई वुड से कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जो जिसका जो रिस्पॉन्स है वो 100% होता हो. ठीक है, there is no such thing as all. There is always some sort of resistance, there will be always some sort of impedance, some sort of conductance, some sort of inductance, a lot of things. जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपकी जो आईसी है, जो चिप है, उसके अंदर जो है एरर्स होते हैं. so these errors are caused due to manufacturing or other stuff. गर्मी की वजह से, गर्मी ऐसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, so it can be anything. सही है,
So there will always be some sort of resistance in your pathway. But यहाँ पर ideal conditions में we are considering कि V out will be absolutely equal to V in, यानी जो आप V in दोगे, जो आपका इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा, they will be equal, यानी जो आपका गेन है uh, well you won't have any gain at all. So yeah, इसलिए यहाँ पे you can see this formula that G is equals to V out upon V in. So we have considered N1 plus 0 is equals to 1. So G is equals to 1. Okay. So voltage follower की फिर ज़रूरत क्या? I mean like you guys must be wondering कि भाई मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वही आउटपुट में मिल रहा है, तो मैं बीच में ये इस आईसी का खर्चा कर क्यों रहा हूँ? तो मैं वही चीज़ आके बेच दूँ, मुझे इस आईसी का खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? बट ये सी वोल्टेज फॉलोवर जो है वो एज अ बफर यूज होता है, ठीक है। हाई इनपुट रेजिस्टेंस जो है जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है लो इनपुट रेजिस्टेंस के साथ, तो वहाँ पर जो है जब आपने एक गेन भी मेंटेन करना है between output and input voltages, like you don't want a gain, okay, you don't want to gain anything, but what you want to do is you just want to create a buffer, ठीक है, which is exactly not jumping around or fluctuations उसकी कम करने के लिए, you know what a buffer is. There is many applications of capacitor as well, which is used as a buffer sometimes. So just like that, uh, if this is used as a buffer, okay, this is a voltage buffer. Um, so that's what this voltage follower is actually used for. ठीक है? अच्छा, again now ये जरा implement करते हैं, then हम आगे देखते हैं कि हमारे पास what do we have. So we're going to again get a function generator, and since we are not using any resistance here, so op amp straight away, and ground, and for oscilloscope, what else do we need? Yeah, VCC and VEE. Also guys, मैंने आप लोगों को last time एक कहा था that you guys should see के VCC और VEE की अगर आप वैल्यूज को कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या उससे आपके आउटपुट पे फर्क पड़ता है या नहीं, ठीक है। Try it, you should really you know do some research about it, at least try it on this software, okay. किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, so let's see what do you get. um -15 +15, and at last we need the oscilloscope. Okay, this will go to pin number 3. You can also go for pin number 2 as well. What I guess you guys should try कि इसे पिन नंबर 2 में अटैच करके देखें तो क्या होता है. And try new things here. This is an open software which is beyond capabilities and all these things. You can do so much here. So इसे ज़रा explore करो, take a look at it, what things you can do, and maybe you will find something new out of it. Do a research or something.
Here we have it, A and B. We'll go for A this, B this. So is that it? Yeah, that's it. Okay, function generator पे हम लगाते हैं 10 volts peak to peak. No, I'll go for 1 volt peak to peak. Okay, that's just about it. As you know, इस lab में भी like lab number 3, इस lab में भी you have to really change the frequency and see what the output is. So ये कि output पे क्या effect आता है by changing your frequency, and also fill the table where you guys really see what's happening. अगर कोई चेंज आपको महसूस होता है so do note it down. ठीक है. Now it might seem कि ये एक ही आपके पास आउटपुट आ रहा है, but no, these are two outputs. Okay, see here कि मैं अगर अपने इनपुट का स्केल बढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट स्केल बढ़ा रहा हूँ कि मैं उसे 1 वोल्ट पर डिवीजन कर दूँ. सही दिस इज 1 वोल्ट पर डिवीजन, ये एक डिवीजन कहलाएगी. तो क्या होता है, और जो हमारे पास आउटपुट है वो 5 वोल्ट पर डिवीजन है. सही. नाउ इसे भी अगर मैं 1 वोल्ट पर डिवीजन कर दूंगा, सो दे बोथ विल बिकम exactly the same, because that is what voltage follower is. Say it's exactly the same. You get what you input as your output. There is no gain, no change, nothing at all. Just a voltage buffer, just like I told you. That is for your real life applications. See? So that's it. This is your voltage follower. ठीक है. I'll do that later. So with that, now आपके पास एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रोसीजर्स गिवन है. ठीक है कि आपने जो है इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है. आप वोल्टेजेस को चेंज करें. ओके, और इसमें अगेन यू हैव टू change your frequencies, 1 kilohertz, 100 kilohertz, megahertz, something like that. Change your frequencies, change your voltage, change your input, and then see कि आपके पास output क्या आता है. So again, fill these observations, fill this table, and answer this question. Okay, do some research and work hard. ठीक है. If you guys have any question, please ask. You can also ask me in the comment section below, or you can ask me in our WhatsApp group that we have created. So मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो WhatsApp पे भी सॉल्व कर लूँगा. यहाँ पे भी I can answer. So whatever you guys have in your mind going on, whatever you need to ask, whatever there is a confusion, so just ask me. Okay, use your comment section below, and good luck. See you next time. Allah Hafiz.